Okay, so hello everybody. Hello everybody and welcome to once again a baking class for you. It's a free class. So I welcome you all once again to Pankhuri YouTube live. तो मैं आपको बता दूं that I will be a host for this session and my name is Sanskriti. So आज आप बहुत अमेजिंग चीज सीखने वाले हो. It's something that हो सकता है कि आपने नहीं सीखा हो कहीं पर या नहीं देखा हो कहीं पे. So it's like बहुत न्यू है but it's still very tasty and I can tell you this with experience क्योंकि मतलब जब आप ऐसे देखोगे and when you know see those things, those little squares, and you will be like, wow, I also want to eat these things. ठीक है, तो आज आप वो चीज यमी चीज सीखने वाले हो और उस रेसिपी का नाम है बाकलवा इजी स्क्वायर्स. सो बाकलवा इज समथिंग a dessert, ठीक है, जिसके लिए आज सब लोग आए हो. It's like a little dessert which आज आप सीखने वाले हो with our trainer Kavil. So I will introduce her also in just 2 minutes. तो आज आप वो सीखने वाले हो and I'm sure you're going to find it very very nice क्योंकि वो easy भी होते हैं. Still it's very very tasty as I already mentioned. मैं बार बार कह रही हूँ I know but it's like वो वैसा ही है. ठीक है, तो that's why I've been saying one again and again. तो मैं आपको बता दूं कि बाकलवा इज एज आई टोल्ड यू बहुत लिटिल चीजें होती हैं. ठीक है, तो वो कैसे होता है कि मतलब आज हम बहुत उसका सब प्रोसेस सीखने वाले हैं. सो यू गोइंग टू मेक इट एट होम है ना. एंड दिस इज अ फ्री क्लास. वी डूइंग इट ऑन द Pankhuri ऐप इटसेल्फ. सो अ लॉट ऑफ यू नो आज आप मतलब एकदम रेडी टू बेक रहो बिकॉज ये आपके लिए विन विन सिचुएशन हो रही है. And so I will tell you what you're going to learn today. You're going to learn the process of this mouth watering baklava squares and we're going to learn the filling. उसके साथ preparing the pan and assembling phyllo sheets and the filling. ठीक है, तो और what we're going to do मैंने आपको बता दिया है. एंड वी गोइंग इसके बाद क्या करने वाले हैं बेकिंग टू परफेक्शन. यू नो आज आप सब सीखने वाले हो फ्रॉम लाइक 0 to 100 like microwave everything. So like it's a win-win for you as I already said. तो मैं आपको बता दूं that ये फ्री सेशन है हमारे पंखुड़ी ऐप का. सो यू अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी है आपके पास ये लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगी. मतलब you're going to learn it today as well live पे but you will also get the recording जो आपके पास हमेशा रहेगी. okay, the recording will be with you till lifetime. ठीक है, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए मतलब पीडीएफ है इस रेसिपी का, यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट दैट and that is free of cost हमारे Pankhuri app पे. You just have to go on the Pankhuri app, book yourself this class and you're good to go. मतलब it's done. So Kamal is here and Kamal will be our trainer for today. So hi Kamal, how are you? Hi Sanskriti and hi to everyone. I am good. Okay, so आज हम बाकलवा स्क्वायर्स बना रहे हैं. So how do you like it और आपको कितना ज्यादा पसंद है? I just want to know that पहले क्योंकि आप ये सिखा रहे हो तो I'm sure कि मतलब आपने टेस्ट किया होगा. बिल्कुल बिल्कुल. बकलावा स्क्वायर्स हमारे बकलावा इंडिया में काफी टाइम से अब तो फेमस है बट वैसे ये मिडिल ईस्टर्न डिश है. सो दिस इज अ मिडिल ईस्टर्न डिश बट नाउ इट इज क्वाइट फेमस इन आवर इंडिया आल्सो एंड इट इज क्वाइट अवेलेबल एट डिफरेंट प्लेसेस. बहुत डिफरेंट जगहों पे मिल भी जाती है अब. So like मतलब मैंने जैसे हाँ पॉपुलर है बट आई जस्ट हर्ड इट वेरी रिसेंटली. मैंने बहुत ज्यादा से पहले से नहीं सुना हुआ. सो वेयर डिड यू लर्न इट एंड मतलब आपने कहाँ से देखा था एंड ओरिजिनली कहाँ से है ये चीज? I got to know about it 5 years back and this is from Middle Eastern as I said. So after that like when you see it, it looks like very difficult thing. But when you come to know about it, when you dig inside and when you have a fantasy of learning it, this is quite easy. तो दिखने में जब आप देखोगे इसको कहीं मार्केट में दिखेगी आपको तो ऐसा लगेगा वो ये क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है. बट जैसे जैसे अगर आपको कुकिंग का इंटरेस्ट है या बेकिंग का इंटरेस्ट है आप देखोगे तो आपको पता लगेगा इतनी डिफिकल्ट नहीं है बट देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है. तो कभी कभी हमारा माइंड कहता है कि डिफिकल्ट है बट आज आप सीखोगे कि ये रेसिपी बहुत बहुत इजी है. सो बिल्कुल ग्रेट चीज लग रही है मेरे को. तो ये मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं
चालू करूँ अपना अवन, मैं चालू करूँ अपना मिक्सर, मतलब मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए. सो आई होप कि आप लोग भी रेडी हो विद एवरीथिंग दैट यू नीड. पंखुड़ी आप पे जाइए तुरंत, यू कैन मेक दिस बुकिंग एंड सी द रेसिपी, यू कैन सी द प्रोडक्ट्स दैट आर नीडेड एंड यू गुड टू गो. आज ही आप बेक कर सकते हो विद द लाइव सेशन, और यू कैन ऑल्सो सी द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, और आप बाद में भी सीख सकते हो. तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस, क्योंकि एज आई सेड वेरी टेस्टी. क्योंकि जैसे कमल ने भी बोला, दिखती बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सी है बट होती नहीं है, राइट कमल? सो Yes, आज आप सीखने exactly. वाले कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं होती है, राइट? सो मतलब मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन हो रहा है, दिस इज लाइक अगेन अ फ्री सेशन, और इसमें जो भी आपको मतलब सीखना है, यू गोइंग टू लर्न इट फुल एंड फाइनल. पंखड़ी ऐप पर भी आप जाकर ये देख सकते हो, और यू कैन ऑल्सो सी ऑन द यूट्यूब एज यू आर. प्लीज पुट ऑन एनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव, आई विल टेक इट फॉर कमल. आपके सारे ही क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे. मतलब जो भी आपका क्वेश्चन है जिससे भी रिलेटेड, वॉट एवर वी आर मेकिंग टुडे, you can just put it in the chat box and I will ask you to come in and let you know the answer. आपके सारे questions यहाँ पे solve हो जाएंगे. दोनों languages में होने वाली हैं बातें, तो language के बारे में भी you don't have to worry. So everything is like a go. तो आप, मैं ये बता दूं कि all the questions again will get answered. So Kamal, are we ready for this very amazing and mouth-watering recipe? Yes, we are quite good to go. Chalo, nice. That's great. So participants, please आप लोग active रहिए. All the questions are going to get answered. I'm here anyways. ठीक है? Please be here till the end for more information. Okay? Okay. Okay, so hi everyone. I am Kamalpreet. Many of you know me, but if you don't know me, now you will get to know me. तो बहुत लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे. तो जैसा कि संस्कृति ने आपको बताया, आज हम बनाने वाले हैं easy baklava squares. As Sanskriti told you that we are going to make easy baklava squares today. So let's quickly start for that. फटाफट start करते हैं उसके लिए. So for that, the first thing we need is walnuts, which I have in this mixer. This is 1 cup of walnuts. तो ये 1 कप वॉलनट्स है. या तो आप इनको लाइटली चॉप कर लो, छोटे छोटे पीसेस में कर लो, नहीं तो इजी अगर आपको करना है तो मिक्सी में हल्का सा पल्स आपको बस करना है, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं बेसिकली. तो ज्यादा पाउडर फॉर्म नहीं बनाना. सो यू डोंट हैव टू मेक दिस इन पाउडर फॉर्म. Just in a mixer, give it a light pulse so that it can be in small pieces. That's it. Or you can chop it with a knife also. Okay. So here we have walnuts, and in this I'm going to add cinnamon powder. So यहाँ पे मेरे पास 1 कप walnuts हैं और इसमें मैं cinnamon powder ऐड करने वाली हूँ. Half TSP cinnamon powder I'm using. So यहाँ पे मैंने I have used half TSP cinnamon powder. यहाँ पे मैंने use किया है half TSP cinnamon powder. So we will mix walnuts and cinnamon together and we will keep it aside. So walnuts और cinnamon हम यहाँ पे mix कर लेंगे अच्छे से और इसको हम side में रख देंगे. Next we are using our phyllo sheets. तो हम जो next use कर रहे हैं वो है phyllo sheets. The packaging is like this. So this you can see it's from the company Switch and you can see a baklava on the packet. So this is specially for baklava only. So company आप देख सकते हो Switch है और यहाँ पे आप देख सकते हो baklava बना हुआ है तो specially baklava के लिए ये sheets हैं. And I am using a pan. This is 6 inches, 6 to 7 inches of square pan. तो ये जो है 6 से 7 इंच का square pan है. तो इसमें आज मैं ये baklava बनाने वाली हूँ. So I'm going to make this baklava in this pan today. Okay. The other thing we need is melted butter. So जो और हमें एक चीज चाहिए वो चाहिए melted butter.
So we have melted butter also here. So यहाँ पे हमारे पास melted butter भी आ गया है. और जो last चीज हमें चाहिए वो चाहिए शहद. So the last thing we need is honey. Okay, so let's start. So हम start करते हैं assemble करना इसको. So you will keep your phyllo sheets wrapped, otherwise they can go dry. So आप अपनी phyllo sheets को cover करके रखोगे, नहीं तो वो dry up हो सकती है. So first we will nicely grease up the pan. तो सबसे पहले हम pan को अच्छे से grease करेंगे. With butter or oil, greasing can be done with anything. या तो आप तेल ले सकते हैं, या तो आप मक्खन ले सकते हैं. Grease किसी भी चीज से कर सकते हैं. Even from the sides, we will grease it nicely. साइड पे भी हम अच्छे से तेल लगाएंगे. ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बकलावा जब हम निकाले तो इजीली निकल जाए. So we are doing this so that baklava comes out easily once it is done. Once the greasing is done, we will start with the sheets and we will place single sheet. तो जब ये greasing हो जाएगी तो हम एक एक करके sheets रखना start करेंगे. Okay, and this we will grease it with butter. पहली शीट हमने लगाई, उसको हम बटर से ग्रीस किया. ये जैसे अगर हम बटर की जगह कैन वी यूज घी? घी आप ट्राई कर सकते हो, बट जो बटर का टेक्सचर और टेस्ट होता है ना, वो आपको घी नहीं देगा. द टेस्ट ऑफ दिस बटर विल दैट घी विल नॉट गिव, बिकॉज दिस इज अ सॉल्टेड बटर. क्योंकि जो बटर है वो सॉल्टेड है. बट आप ट्राई बिल्कुल कर सकते हो. यू कैन ट्राई. Okay, so we are going to overlap this sheet only, or you can cut it also. So हम इसी sheet को इस पे overlap करेंगे. आप cut करना चाहो तो cut भी कर सकते. But each sheet would be brushed with butter. हर एक sheet butter से brush होगी. So first we will apply layer of 6. तो सबसे पहले हम ऐसे 6 की लेयर लगाएंगे. So here you can see half I have covered with the last sheet only, and half I am going to do with this sheet. तो आपने देखा होगा हाफ जो मेरी पहले शीट बची थी, हाफ पोर्शन मैंने उससे कर दिया था और हाफ मैं इससे कर रही हूँ. Kamal, how is it going to make a difference कि दो वाला शीट मतलब अलग अलग? अलग अलग शीट मतलब मेरे पास मतलब बची half थी half ना sheet. उसमें. अच्छा. एक्चुअली ये शीट बड़ी होती है, तो मेरे पास बची थी तो हाफ मैंने यूटिलाइज कर ली. बिना कट किए काम इजी हो जाता है. और बाकी जो हाफ थी, मैंने न्यू शीट जो ली वो मैंने हाफ से स्टार्ट करी. क्योंकि मैं हाफ से स्टार्ट नहीं करती तो ये पोर्शन इनकम्प्लीट रह जाता, ये वाला कंप्लीट हो जाता. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन अ शीट, द शीट इज लॉन्ग, so I have given it 2.5 wraps, so that comes till here. So either you can cut it, but the cutting gets more difficult. So what I do, I wrap it. So that sheet ends up here. So from this corner, I have started another sheet to make complete 3 layer. Like Achha, I have these are overlapped it ready-made again. sheets, like? Yes, these are ready-made sheets. Okay. And what is the company? Once again, I'll type it down.
It's Switz, SWITZ. Okay. So this is the fourth layer. You can see that I am applying butter on each layer. So आप देख सकते हो यहाँ पे मैं हर layer पे butter apply कर रही हूँ. So this comes the last fifth layer. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी fifth layer है. So I have to go with the 6 layers. So पहली लेयर मेरे को 6 की लगानी है, 5 में कर चुकी हूँ और मुझे एक लेयर और लगानी है. तो 5 layers I have already done. 1 more layer I have to apply. So now I will cut. So अब मैं कट करूंगी क्योंकि मेरे को एक सिंगल लेयर चाहिए. Kamalpreet, where can we buy the sheets from? I ordered it from Amazon. You can check Amazon. Okay, and their own, मतलब वो sheets for baklava ही बोलते हैं ना उसको? हाँ, बकलावा शीट्स या फिलो शीट्स आप लिख सकते हो. पीडीएफ में लिखा है फिलो इज FYLLO. फिलो शीट्स आप लिखोगे तो भी आपको पता लग जाएगा. So in this now we are going to add the cinnamon and walnuts mix which we have. तो अब हमारी 6 layers हो चुकी हैं. अब इसके ऊपर जो हमारा वॉलनट मिक्स था, वॉलनट और सिनेमन मिक्स, वो अभी हम इसके ऊपर डालेंगे. So that we will add. So that is up to your choice. If you want to make a nice filling, you can add some extra. But just keep it generously so that the sheets doesn't get uneven on top. So बहुत ज्यादा फिल मत करना, even रखना कि 2 बारी में ये आ जाए. और जो ऊपर वाली हम लेयर यूज करने वाले हैं वो भी ज्यादा अनइवन ना हो. On this, we are going to pour 2 TBSP of honey. So इसके ऊपर हम 2 TBSP honey pour करेंगे. So the total honey is 1/4 cup. 2 TBSP we are going to sprinkle on this. So 2 TBSP हम यहाँ पे sprinkle करेंगे. 2 TBSP हम next जब filling डालेंगे तब sprinkle करेंगे. So 1 TBSP and the other. Now we need 4 layers of phyllo sheets. तो अब हमें जो करना है वो करना है 4 लेयर बनानी है हमें phyllo sheets की. Each brushed with butter. तो जितनी भी लेयर्स आप लगाओगे सारी लेयर्स बटर से ब्रश होंगी. कमल, लाइक ये सिनेमन वाला जो ये पेस्ट वी आर डूइंग, ये पिसा हुआ है राइट? वॉलनट एंड सिनेमन दोनों lightly grinded.
ओके अच्छा, और अगर इसमें हम कोई और फिलिंग डाल सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल रेसिपी ही करनी होती है? ट्रेडिशनल तो यही है, बट आप डिफरेंट ड्राई फ्रूट के अच्छा साथ ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल आलमंड्स के साथ ट्राई कर सकते हो। ओके। और जैसे कि पैटीज में होता है, यस, अगर दूसरी फिलिंग यस ट्राई कर सकते हैं एग्जैक्टली, मतलब। ओके। पैटीज में ऐसे लेयर्स होती हैं एग्जैक्टली। So the second layer, we are brushing it with butter again. So जो second layer है उसको भी हम यहाँ पे अच्छे से ब्रश से बटर लगा रहे हैं इसमें। This is the third layer. So if you have any gaps like this, that will always come inside. So अगर ऐसे कोई भी gaps आपकी भी sheet में बन रहे हैं ना, जैसे ये cuts दो sheets combine करके मैंने एक बनाई, तो वो हमेशा अंदर की side आएंगे। So if you are also joining two sheets at a point, that will always be inside. And participants, the PDF will be on the Pankhuri app itself. अभी जो हमारा the concerned person who used to upload the PDF, she was on a leave, so we are very sorry for that. At end of the day तक you will get the PDF on the app. तो आपको app पे ही PDF मिल जाएगा of this recipe, okay? So now again, but I'm telling you everything side by side. सारे measurements मैं आपको साथ साथ बता ही रही हूँ। तो आप अगर recording भी देख लोगे तो यहाँ पे भी आपको clear हो जाएगा. If you will see the recordings, it would be clear here also. So the remaining filling we will put here. So जो remaining हमारे पास filling बची थी वो हम इस portion में डाल देंगे. Okay, so Kamal, the traditional filling, someone is saying कि pistachio से होती थी, pistachio and walnut. Is it pistachio and walnut Pistachio or and cinnamon? walnuts, yes. It is only walnuts, but yes, pistachio, individual pistachio, individual walnuts, combination of walnuts and pistachio. These three are the traditional filling. So ये तीनों ही traditional filling है. So on top again 2 TBSP of honey. तो यहाँ पे हम दोबारा honey डाल देंगे 2 TBSP. Okay, and now again we have to give it 6 layers. तो यहाँ पे दोबारा हमें 6 layers देनी है. So this sheet is very delicate, so handle it very carefully. So आप जब भी बनाएंगे, ये जो sheet होती है बहुत ही delicate होती है, तो इसको बहुत संभाल के handle कीजिएगा.
You're just greasing it again? Yes, each and every sheet needs to be, each and every layer needs to be greased. हर एक layer grease होगी. ये कमल पूरी रेसिपी मतलब द फाइनल प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लगता है? Baking में around 25 to 35 minutes और preparation में around 15 minutes. So you can say around 40 to 45 minutes. अच्छा, तो first 6 layer, then filling, then 4 layers, then again filling in last 6 layers, right? Yes. Okay. Great, Shrestha. So this is 3, this is 4. कमलप्रीत, आप इसकी प्राइसिंग के बारे में थोड़ा ऐसा आइडिया प्लीज गिव द व्यूअर्स. Sure, I will. How can we sell this? वही क्वेश्चन आ रहा है. When you will cut in the piece, you can use chocolate boxes to put the pieces in it. And generally, one piece is sold between 40 to 60 rupees. एक piece 40 से 60 रुपए का sell होता है, depending on which city you are living. Obviously, what people are willing to pay, वो बहुत depend करता है. और इनको आप पीसेस कट करके चॉकलेट बॉक्सेस में पैक कर सकते हो. चॉकलेट बॉक्सेस की जैसे कैविटी होती है, एक सिंगल पीस इतना ही काटना है कि चॉकलेट की जो कैविटी होती है उसमें आ जाए. आई होप दिस इज क्लियर. पैकेजिंग एंड सेलिंग प्राइस. So I just need some more butter for or थोड़ी सी what can they like put this in the freezer or the fridge, and what is the shelf life with both? Okay. Let me just keep it in the baking, then I will discuss the shelf life and other things. So just 2 से 3 मिनट और लगेंगे. इसको मैं एक बार लाइव बेकिंग आपको दिखाऊंगी. यहाँ पे बेकिंग पे डाल दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके शेल्फ लाइफ और इसको कैसे आपको स्टोर करना है. Any queries till now regarding the recipe, what we have done, anything regarding that? कोई भी questions जो अभी तक हमने किया हो उसके regarding हो? Is puff pastry sheet same as the phyllo sheets? No, puff pastry is thick. Phyllo is thin. Phyllo sheets जो होती हैं वो पतली होती हैं और जो puff pastry की sheets होती हैं वो थोड़ी मोटी होती है. ओके और ये अगर 6-4-6-4 नहीं करना है तो लाइक मतलब इज दैट द नेसेसरी थिंग कि पहले 6 लेयर देन 4 लेयर फिर 6 लेयर? हाँ बिल्कुल, दिस इज नेसेसरी, बट इफ यू वांट टू गो फॉर 6-6-6 दैट आल्सो फाइन. 6 नीचे 6 ऊपर हम इसलिए देते हैं ताकि बेस स्ट्रॉन्ग बने और फिलिंग होल्ड हो जाए. So 6 on the upper side, 6 on the lower side we give,
so that the base is strong to hold the filling. 6 on Okay. top, 6 at the bottom is necessary. In the center, if you want to go for 6 again, you can do that. 6 ऊपर 6 नीचे तो जरूरी है. बीच में अगर आप 6 लेना चाहते हो 4 की जगह तो वो आपकी चॉइस है. And do we serve it hot or cold? This needs to be served cold. So on the last layer, I will not apply a thick layer of butter, just lightly grease it. So जो top की layer है उसको मैं बहुत ज़्यादा grease नहीं करूँगी, हल्का सा grease करूँगी और छोड़ दूँगी. इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें यहाँ पे इसके pieces cut करने हैं. So what we have to do next, we have to cut the pieces. So be very gentle with it. And if some of the filling is coming out, that's totally fine. अगर थोड़ी सी बहुत लाइटली से फिलिंग बाहर आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करो कि बहुत आराम आराम से आप इसमें कट बना दो, क्योंकि बाद में कट करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज कटिंग इट आफ्टरवर्ड्स इज डिफिकल्ट. ओके, तो पैटीज में भी यही शीट्स होते हैं राइट, या पफ होता है उसमें? किसमें? पैटीज में पफ. अच्छा, तो ये वाले शीट्स अलग है राइट? यस, दीज शीट्स आर डिफरेंट. आई हैव शोन यू द पैकिंग. यू कैन सी दैट इट इज स्पेशली फॉर बकलावा. तो आपको मैंने पैकेट दिखाया था ना, पैकेट पे भी आपने देखा कि बकलावा बना हुआ था. तो ये स्पेशली शीट्स जो होती हैं बकलावा के लिए होती है. ओके, सो आई एम कटिंग इट लिटिल बिग. ओके, बट यू जस्ट सी योर पैकेजिंग साइज एंड देन कट इट अकॉर्डिंगली. आप जिस भी चॉकलेट बॉक्स में इसको पैक करना चाहते होगे ना, पहले वो साइज देख लेना, उसके हिसाब से इसको कट करना. मतलब कमल, इज इट नेसेसरी टू मतलब कट बिफोर फ्रीजिंग और बेकिंग कि पहले आप? यस इट इज. नो नो, इट इज नेसेसरी. अच्छा ठीक है. Again, you can see I am doing it from the other side. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कट मैंने ऐसे बनाया है. अब जो दूसरा कट बनाऊंगी मैं वो ऐसे बनाऊंगी. So horizontal and vertical, both side you have to make the cuts so that we can get a square piece. ताकि हमें जो piece मिले वो square मिले. And just make it little deep so that all the sheets are cutted nicely. So जो कट बनाओगे वो अच्छे से डीप बनाना. फील करना कि नीचे से आपको बेस फील हो रहा है, ताकि बाद में दिक्कत ना आए और सारी शीट्स अभी प्रॉपरली कट हो जाए. जस्ट फील द बेस with your knife so that it doesn't create any problem later on. प्रीहीटेड ओवन में बेक करना राइट? Yes, yes, I will tell you all the settings. Just give me some time. Just last cut I have to make. And can these be like made on the gas also? No, for this you need OTG only. ये आपका OTG में ही बेक होगा. Okay, so now for OTG, the settings would be 180 degrees Celsius, upper rod on, lower rod on, sorry, 175 degrees Celsius, upper rod on, lower rod on, and fan also on. If you don't have, that's totally fine.
The oven should be preheated for 10 minutes and then you will bake this for 25 to 35 minutes or till the time it is golden. So oven की settings जो रहेंगी वो रहेगी 175 डिग्री और ऊपर की रॉड ऑन रहेगी, नीचे की रॉड ऑन रहेगी. फैन अगर है तो फैन भी ऑन रहेगा. प्रीहीट करोगे पहले आप उसको 10 मिनट के लिए और उसके बाद उसमें आप बेक करोगे 25 से 35 मिनट ले या जब तक ये गोल्डन हो जाए ऊपर से. ओके, तो मेरा ओवन अभी प्री हीटेड है, फटाफट इसको हम डाल देते हैं. So the oven is preheated. Let's quickly put this inside. Yeah. So now we can take the questions if you have any. I'm sorry. Yeah. So कोई भी क्वेश्चंस हैं तो अब हम ले सकते हैं. लाइव बेकिंग भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने ओवन की तरफ कैमरा घुमा के. On the top, if you want to garnish it with some more walnuts, you can do it with walnuts powder. तो ऊपर से आप गार्निश अगर करना चाहते हो वॉलनट पाउडर से तो वो भी आप कर सकते हो. बहुत लाइटली करना, ऐसा ना हो कि बर्न हो जाए. जस्ट पुट इट लाइटली, इट शुड नॉट बर्न. और यू कैन डू इट 5 minutes बिफोर द बेकिंग कंप्लीट. या तो आप 5 मिनट पहले, बेकिंग कंप्लीट होने से पहले भी उस पर स्प्रिंकल कर सकते हो. उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हल्का सा रोस्ट हो जाता है और कलर भी बहुत अच्छा रहता है. ओके, सो कमल 2-3 क्वेश्चन है कि ट्रे कहाँ रखनी है. ट्रे कहाँ रखनी है? ट्रे मिडिल या लोअर रैक पे रखनी है. यू विल कीप द ट्रे ऑन द मिडिल और लोअर रैक. अच्छा, और शीट की रेंज क्या होती है, लाइक दो अंदाज? This packet is for 450 rupees and the quantity is around 450 grams. 450 रुपए की शीट आती है, 450 ग्राम. So it's a good quantity. You can make this around 4 recipes like this in a box. So 3 से 4 recipes आप create कर सकते हो एक box में. ओके, दैट्स ग्रेट. तो फिर ये ओवन में कहाँ रखना है? ऑलरेडी सॉल्व्ड. ये गैस में बेक नहीं होती है. नो. एंड साइज ऑफ द टिन 6 to 7 inches. अगर उससे छोटी टिन we already have, so do we need to purchase a bigger tin for this recipe? No. If you have smaller tin, just follow the same method. The difference will come in the filling. Obviously, if your pan size is small, your sheets would be same. So you have to see this size of your tin. You have to follow the same method, 6-4-6. But filling you have to reduce, and then you have to evenly divide it into 2 parts. You have to just fill this much, which we have done in the class. So you have to do it visualize. आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, जितनी ये फिलिंग हमने अभी भरी है इतनी ही भरनी है. ऐसा नहीं कि आप पूरी 1 कप वॉलनट्स का बना रहे हो, पैन छोटा है और पूरी फिलिंग कर रहे हो. तो वो थोड़ा सा फिलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा. बाकी यही फॉलो करोगे 6 की लेयर, तो आप किसी भी पैन में बना सकते हो. सिर्फ फिलिंग का ध्यान रखना है और हनी का ध्यान रखना है. हनी थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिलिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी. So the quantity of honey will reduce and the quantity of filling will reduce. Rest, I think you can manage. Okay, so बेक होने के बाद गार्निश नहीं कर सकते. 5 मिनट पहले कर दीजिएगा अगर आपको करना है. बेक होने के बाद वो स्टिक नहीं करेगा, उस पे प्रॉब्लम बस इतनी है. After once it is completely baked, it will not stick. Okay, तो फिर can you show again? What can we show again? Please specify. माइक्रोवेव में बेक कर सकते हैं, माइक्रोवेव में ही बेक करना है. And size of the tin. You can try in microwave if this comes out perfectly. But OTG is the best thing for it. You can try your air fryer also. You can try gas tandoor also. In gas tandoor or in air fryer, it can come out nice. Microwave, not so sure, but you can always try. माइक्रोवेव में इतनी श्योरिटी नहीं दे सकती, बट बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो. आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करो, थोड़ा सा ट्राई करो. गैस तंदूर और एयर फ्रायर में मे भी अच्छे रिजल्ट्स आ जाए. ओके, तो रोस्टेड वॉलनट लेना है.
I have taken normal, but if you want to take roasted, you can take also. But as you can see, this is in the oven for a good time. It will roast. So oven में आप देख रहे हो काफी अच्छे टाइम के लिए ये जा रही है रेसिपी, तो अपने आप रोस्ट हो जाएंगे. अगर आप प्री रोस्ट करके डालना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. If you want to pre roast then put it, you can do that also. But while baking, it is already roasting inside. I got late and missed it. No worries. You always have this on the Pankhuri app and on YouTube both. Yes, exactly. Don't worry. So it is originally made with pistachios. Yes, आप उसको भी try कर सकते हो. With pistachios, with almonds, not with raisins, but almond, pistachio, and walnuts. These three things which you can try this with. बादाम, पिस्ता, वॉलनट्स या तीनों का कॉम्बिनेशन या कोई दो का कॉम्बिनेशन आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो. किशमिश मत डालना बस. Kishmish is a no-no for this recipe. Rest, almond, pistachio, walnuts, or combination of any two or combination of three, it's totally fine. Okay, so can we like buy a smaller packet? मतलब smaller packet आता है छोटा? You can search. Okay. I'm not so sure, but you can search. But this is good for the shelf life is quite good. You can just keep it in the freezer. Shelf life अगर बड़ा भी पैकेट आपको मिलता है तो shelf life काफी अच्छी है. और फ्रीजर में आप इसको रख दो तो आप बना सकते हो, मतलब 2-3 महीने तक आप बना सकते हो. So baking के बाद कहाँ पे store करना है? In the fridge? No, after baking you have to see, like in summers, yes, in airtight container and in fridge, but in winters you can store it at room temperature also. Winters में जब अच्छी खासी ठंड होती है इंडिया में तब आप room temperature पे भी इसको रख सकते हो, but airtight container में रखोगे. But summers में airtight container में डाल के आप इसको fridge में store करोगे. Okay. और कोई क्वेश्चन अभी नहीं है, बट दे आर आस्किंग कि कितना टाइम लगेगा ओटीजी में फॉर लाइक द फाइनल रिजल्ट. It will take around half an hour. So half an hour कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछे तो आप पूछ सकते हो. लाइव बेकिंग में मैं अभी आपको दिखाऊंगी. पहले हम क्वेश्चंस ट्रीट कर ले सारे हैंडल. अभी के लिए हो गए हैं कमल क्वेश्चंस. Okay, I will just show you the live baking here. And if you have any confusion for the settings, I will show you that also. Just one second. So here you can see. So it will just puff little. You can see it is starting to puff. And when it will just turn good golden, we will take it out. So यहाँ पे हमारा puff होना start हो चुका है, फूलना start हो चुका है. जो शीट्स हैं हमारी वो फूल जाएंगी और बहुत अच्छा बकलावा निकल के आएगा. और जैसे ये गोल्डन हो जाएगा हम इसको निकाल लेंगे. So settings you can see it's 175 degrees Celsius. So settings में आप देख सकते हो 175 degrees Celsius है. And upper rod on, lower rod on, and fan also on. If you have, if you don't have, that's totally fine. ऊपर की rod on रहेगी, नीचे की rod on रहेगी, fan on रहेगा. अगर है नहीं है तो कोई problem नहीं है. Okay? Can you please tell them once again कि time और temperature and air fryer में कितने देर रखना है? एयर फ्रायर में भी टेम्परेचर सी. एयर फ्रायर एक तो उसकी स्पेस छोटी होती है, तो अगर आपको ट्राई करना है एयर फ्रायर में तो पहले तो आप उसी के साइज के कंटेनर में बनाना जो उसमें फिट आ जाए. So if you want to try an air fryer, the space in air fryer is less. So just make a bowl or a mold of the size which you can fit in it. Okay. Second, you will set the temperature at 175 degree. And you will do the baking for around 20 to 30 minutes. Air fryer is small, the heat revolves very quickly, so it will take less time.
जो एयर फ्रायर होता है वो छोटा होता है, तो जो हीट होती है वो बहुत जल्दी घूमती है, तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। 20 से 30 मिनट के लिए आप उसमें बेकिंग करेंगे। टेम्परेचर सेट करेंगे 175 डिग्री सेल्सियस। You will set the temperature at 175 degrees Celsius if you're trying in air fryer. And you will also preheat for 5 minutes. Air fryer में रखने से पहले आप उसको preheat करेंगे 5 मिनट के लिए. Okay? But keep a eye on it. When it's turned golden, that means it's ready. आपको उस पर देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा एयर फ्रायर में फर्स्ट टाइम कि जब वो गोल्डन हो जाए मतलब वो रेडी है. ओके. You can also try in gas tandoor, but you have to see the timings and the temperature would be low. गैस तंदूर पे भी ट्राई कर सकते हो, टेम्परेचर लो रहेगा और टाइमिंग्स थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, 20 to 30 मिनट्स के अराउंड आपको खोल के देखना पड़ेगा गोल्डन कलर के लिए आया है कि नहीं, और जब बोल जाए तब आप निकाल लेना. अच्छा दैट्स नाइस. तो आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन था ऑल्टरनेटिव्स वाला. ऑल्टरनेटिव्स में अभी कमल ने बता दिया, एयर फ्रायर का भी बता दिया, गैस का भी बता दिया. ओके, कैन वी मेक दिस scratch, can we make this from scratch? Phyllo sheets. Phyllo sheets are made with scratch also, but that is a very lengthy process. Just stay tuned to our Pankhuri app and maybe we will come up with a class of this. ठीक है, पंखुड़ी ऐप पे आप बने रहिए, चेक करते रहिए. मे बी हम कभी इसकी क्लास भी लेके आएंगे तो आप सीख सकते हो, क्योंकि बहुत टेक्निकल और डिफिकल्ट पार्ट होता है, इसलिए मोस्टली रेडीमेड यूज होती है ये. बट कभी भी हम आए तो आप देख सकते हो पंखुड़ी ऐप पे. राइट संस्कृति? यस, पार्टिसिपेंट्स प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर अगर आपको देखना है कि आप स्क्रैच से कैसे बना सकते हैं. ओके, एंड व्हाट डू वी कॉल दीज शीट्स? दीज आर phyllo sheets for baklava. After baking, we don't have to add anything. After baking, no. Just if you want to do for garnishing, I have already told you, you have to do it 5 minutes before. अगर आप गार्निशिंग के ऊपर से डालना चाहते हो तो 5 मिनट पहले या बेकिंग में डालने से पहले हल्का सा ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो जो भी आपने फिलिंग अंदर करी है. So you can lightly just sprinkle the filling which you have done inside on top lightly to just give it a good look. अच्छा, और ये मतलब ये कितने देर में रेडी हो जाएंगे? हमको बस वी जस्ट हैव टू सी द गोल्डन कलर, राइट? Yes. Basically, the time, and you have to keep a look. See, oven to oven, gadget to gadget, the results are different. So you always have to keep an eye on it. When it will give you a nice golden color, take it out of the oven. That means it's ready. ऊपर से जब भी आपको एक golden color मिल जाए, उसका मतलब ये तैयार है, तो आप निकाल लीजिए. जिस भी गैजेट में बना रहे हो, ओवन में बना रहे हो, सारे ओवन्स का थोड़ा सा टाइम डिफर करता है, डिफरेंट गैजेट्स का टाइम डिफर करता है. तो ये आपको चेक करना पड़ेगा फर्स्ट 1-2 टाइम्स में जब भी आप बनाओगे कि आपके गैजेट में पर्टिकुलर टाइम कितना लग रहा है. सो यू हैव टू चेक फॉर फर्स्ट और सेकंड time that how much time your gadget is taking, and then in future you will know that my gadget take this much time, so I have to keep it in for this much time. आगे से कभी आप बनाओगे आपको पता होगा कि मेरे गैजेट में इतना टाइम लगता है, मुझे इतने टाइम के लिए बेक करना है. 1-2 बार का ध्यान रखना है. हाँ जी, तो यस दिस इज राइट. तो अगर आपको देखना है द फाइनल थिंग, हम लोग पोस्ट करेंगे इसकी पिक्चर्स ऑन द कोर्स क्लब जो कि पंखुड़ी ऐप पर है. सो व्हेन द बकलवा आर मेड, उसकी हम फोटो खींचकर कोर्स क्लब पे भेजेंगे. व्हाटएवर, आई थिंक कमल ही भेज देंगी. So you will be able to see the final product on the app itself. Okay, so you will also see कि कैसा color आया है and everything there. Do we get the recording? Yes, Shrishti, you will be getting the recording on the Pankhuri app as well. और आपको YouTube पे भी मिल रहा ही है. ठीक है, शीट्स को फ्रीजर से कितने टाइम पहले निकाल के रखना है? आपकी जो शीट्स होती हैं जब फ्रीजर में होती हैं बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही होती है, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ. ऐसे ना छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होती है. तो जब ये ब्रेकेज बंद हो जाए, आपकी शीट सॉफ्ट हो जाए, मतलब वो अब यूज करने के लिए, हैंडल करने के लिए रेडी है. सो इस टेम्परेचर पे आपको लेके आना है. सो आपकी सिटी पे डिपेंड कर सकता है वहां पे क्या एटमॉस्फेयर है, रूम टेम्परेचर पे कितना टाइम लगेगा. बट मैं आपको टेक्निकलिटी बता रही हूँ कि जब ये ब्रेकेज बंद हो जाए, इजीली हैंडल हो रही हो, सॉफ्ट हो जाए शीट, तब तक आपको उसको बाहर रखना है और बकलावा बनाना शुरू नहीं करना अगर वो इतनी सॉफ्ट नहीं हुई है. सो लाइक आई हैव यू दिस स्मॉल पीसेस
if the sheet is breaking, it's getting crumbly, that means it's not ready to use right now. But when it's turned soft, that means it's ready to use. So you have to keep it at room temperature till the time it is soft, and it will not get crumble when you touch it. So at that point, you can start making your baklava. I hope this is clear. Okay, so after it's done, can they dip it in the sugar syrup? Sorry, Sanskriti, I missed your question. कोई बात नहीं. After it's done, can they dip it in the sugar syrup? So that is the proper baklava recipe. What we are doing here is easy baklava, but that is little different recipe. And a special syrup is made. That is not just sugar syrup. A special syrup is made, which we soak after baking. So for that, you have to go for another recipe. In this recipe, you cannot do it because it's not just sugar syrup. तो इस रेसिपी में आप सीधा चीनी का पानी नहीं डाल सकते हो. सिर्फ चीनी का पानी नहीं होता, वो ट्रेडिशनल मेथड होता है. हम यहाँ पे इजी बना रहे हैं ना, तो हमने वो फॉलो नहीं किया. वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और उसकी थोड़ी रेसिपी डिफरेंट होती है. तो इस मेथड में आप प्लीज वो फॉलो नहीं कीजिएगा. Okay, so how will we know कि अंदर के layers कुक हो गए हैं? आपको दिखेगा कि ऊपर फ्लफ अप हुआ है, राइज हुआ है. You will see that your baklava have rised, it is fluffed up. Like you see a patty, anybody who have seen a patty in making, patty is always this thin, and once it bakes, the layer rise and the patty puff up to like this. Same procedure we are doing here. So कभी किसी ने पैटी बनती हुई देखी होगी तो पैटी पहले इतनी होती है, ऐसा लगता है सिंपल डो है, ऊपर सिंपल मैदा है, मैदे का डो है. बट जब वो बनती है, जब वो बेक होती है, तब उसकी लेयर धीरे धीरे निकल के आती है और पैटी पफ होती है. सो वही यहाँ पे है, आपको दिखेगा कि पफ अप हुआ है, राइज हुआ है. अच्छा, तो we have to refrigerate the sheets or freeze the sheets? The remaining sheets will go in the freezer. जो बाकी शीट Okay, you बचेंगी have to वो आपको freeze. फ्रीजर में स्टोर करनी है. Yes. अच्छा, And you ठीक है. have to thaw them before using. जो अभी प्रोसीजर मैंने बताया रूम टेम्परेचर पे रखने का, वो thaw करना होता है. तो पहले आपको निकाल के उनको इस टेक्सचर में लेके आना है यूज करने से पहले, कि वो सॉफ्ट हो जाए, क्रम्बली न रहे. So you have to keep it in the freezer, and before using, what I have just explained right now, you have to make it till soft texture. It should not crumble. That you have to follow. अच्छा, तो that's great. अब मैं I was asking कि मतलब जैसे अब ये सब हो जाता है, so like we just have to freeze it after it's baked. कितने देर के लिए फ्रीज हो जाएगी और उसके बाद हम कब सर्व कर पाएंगे? बकलावा बेक नहीं करना और बकलावा फ्रीज नहीं करना. शीट्स जो बची है उनकी बात कर रही हूँ मैं, वो फ्रीज करनी है. Sheet which is remaining, you have to freeze that. You don't have to freeze the baklava. Baklava, we will take it out, let it come to a room temperature, let it cool down at room temperature, and then you can take out individual pieces and you can store it in airtight containers and keep it in the fridge. Baklava जब बेक हो जाएगा, आप इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दोगे, एक एक पीस निकालोगे, ओके, और आप उसको फिर एक एयर टाइट कंटेनर में रख के आप उसको फ्रिज में स्टोर करोगे, फ्रीजर में नहीं. The baked baklava will go in fridge in airtight container, not in freezer. Fridge, okay? And if you have to knead the cuts after baking, do that also. अगर by chance जब puff up होती हैं sheets, तो अगर pieces नहीं निकल रहे हैं, तो आप एक बार cuts को दोबारा clean कर लीजिएगा निकालने के लिए. ओके, तो स्वीट करने के लिए आपने क्या ऐड किया है इसमें? Honey. I have added honey. So in another 5 minutes our baking will be done. 5 से 7 मिनट में और हमारी बेकिंग हो जाएगी. तो रिजल्ट्स मैं आपको दिखा दूंगी. पीसेस कैसे सेपरेट करने हैं वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. How you have to separate the pieces, that I have already told you. I hope you don't have any problem with that. मेरे ख्याल से इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो बेक होते ही अवन से निकाल लेना है या अवन को कूल डाउन होने देना है आफ्टर दैट? अवन से निकाल लेंगे जैसे एक अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा, अवन से हम निकाल लेंगे और हम उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे.
अगर आप उसको oven में रखोगे तो जो oven में heat present है उससे तो और bake होता रहेगा, फिर वो burn हो जाएगा. If you will keep it in the oven, switch off the oven. Oven is hot, the heat is there, it will burn with that heat, or it will keep on cooking. So you have to take it out, keep on the kitchen counter, and let it cool down on room temperature. ओके सो जैसे कभी भी मैंने आपको हमेशा बोला है कि आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ योर डिजर्ट्स एंड यस आपने एक और ऐसे आपने ये दिखा दिया कि यस यू आर दैट कि हमेशा मैं फैन रहूंगी हमेशा फॉर ऑल योर डिजर्ट्स. सो मैं हमेशा सारे क्लासेस देखती हूँ कमलप्रीत के. यू नो आई हैव ऑल्सो टॉट माई फैमिली कि आप ये देखो कमलप्रीत के सेशन एंड यू हैव टू लर्न दिस बिकॉज आई वांट टू ईट इट. सो I've told all my family that you have to see this and learn this and मतलब मेरे को फिर खिलाओगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि सारे जितने भी व्यूअर्स हैं अपने फैमिली को बताओ, खुद सीखो और फिर से बनाओ एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोना लव इट. So Kamalpreet, are we waiting for that to come out or we will be done? Yeah, I think we can give 4-5 more minutes so that participants can at least see the results. अच्छा, and ठीक है. of each piece I will plate it and give you a picture. Okay? Okay, ठीक है. Okay. तो पार्टिसिपेंट्स रिजल्ट्स हम अभी आपको दिखा देंगे, बट पूरा ठंडा होने के बाद मैं सिंगल पीस एक लगा के प्लेट में आपको पिक्चर भेज दूंगी ताकि आपको इंडिविजुअल पीस भी पता लगे कि कैसा होगा. ओके तो 5 मिनट और वेट करेंगे, गोल्डन हो गए हैं, बस थोड़ा सा और हो जाए तो मैं आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ. ओके श्योर, बिल्कुल. तो लाइक यस अगर अभी भी आपके कोई और क्वेश्चंस बचे हैं रिलेटेड टू ऑल द जो भी आपके बेकिंग या जो भी बकलावा के जो और भी क्वेश्चंस हैं यू कैन पुट इट. और लाइक अभी हम बस उसका वेट कर रहे हैं फॉर द रिजल्ट्स टू कम आउट बिकॉज इट इज ऑलरेडी डन. बस 2-3 मिनट हम वेट करेंगे एंड यू विल बी एबल टू सी कि कैसे दिख रहे हैं एंड व्हाट इज द एंड रिजल्ट्स ऑफ द रेसिपी दैट वी हैव मेड टुडे दैट इज इजी बकलावा स्क्वायर्स. ठीक है, दिस इज नॉट द ट्रेडिशनल रेसिपी वंस अगेन, दिस इज द इजी वन. सो आपको भी बनाने में इजी हो एंड देन या So you can also tell me, did you find this recipe easy or not? आप लोग तब तक मुझे ये बता सकते हो कि हमने इस रेसिपी को नाम दिया था इजी बकलावा स्क्वायर, तो आपको इजी लगी कि नहीं लगी? या कमल मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरे को तो काफी इजी लगी. मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू नो आई कैन आल्सो डू दिस एट होम. मतलब इट्स वेरी इजी एंड इट टेक्स सो लेस टाइम. यस. ज्यादा स्वीट करना हो तो हनी की क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं. बिल्कुल, यस यू कैन डू दैट. ओके, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लाइक टू द बकलावा राइट? वो स्वीटनेस के लिए है, और अगर आप और स्वीटनेस ऐड करना चाहते हो तो जो हमने सिनेमन और वॉलनट का मिक्स बनाया था उसमें थोड़ी सी पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हो. इफ यू वांट टू मेक इट मोर स्वीट you can follow the same honey method and you can add some powder sugar with the walnut and cinnamon powder. Okay, so sheets freezer में रखेंगे. Yes, you have to keep the sheet in the freezer. बहुत easy है. Yes, yes, yes. A lot of yeses for the easy recipe. That's great. Super easy. Yes, it's very super easy, and I'm sure it will be so tasty. If you can find this on Amazon, or you can search this on big grocery stores near you, or big grocery stores which are dealing online like Big Basket or Groupers. So on that also you can find this. So अगर आपको ये sheets Amazon पे नहीं मिलती by chance, तो आप अपने घर के पास जो भी बड़ा सुपरमार्केट होगा, ग्रोसरी स्टोर होगा, वहां चेक कर सकते हो, या तो जो ऑनलाइन सुपरमार्केट्स होती है जैसे बिग बास्केट है, ग्रूपर्स है, तो उन पे भी आप चेक कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी. Okay. Sorry, phyllo sheets spelling. Oh, it's okay for the spelling. Yes, these are very easy. So please find those sheets and keep making it. ठीक है, और प्लीज डू टेल अस ऑन दी Pankhuri ऐप या आप प्ले स्टोर पे जाकर भी यू कैन टेल अस वेयर यू कैन जस्ट रेट अस, फीडबैक भी दे सकते हो. यू कैन जस्ट गो देयर एंड टेल अस कि आपने ये रेसिपी बनाई एंड हाउ डिड यू फाइंड इट. प्लीज डू टेल अस. So here you can see. Okay, the light is little less. These are ready. Okay, I will just remove myself.
So you can see, you can just knead the cuts at this point. So इस point पे हम क्या करेंगे, सिर्फ जो cuts हैं उनको एक बार clean कर देंगे. So we will just clean the cuts. Yes, like this you will just clean the cuts. तो जैसे अभी आपने देखा, मैंने एक बार दोबारा कट्स पे दोबारा उनको मारा, तो ये मैंने कट्स को क्लीन किया है और इसको अभी मैं ठंडा होने दूंगी. और जैसे ये ठंडे हो जाएंगे मैं इनको एक प्लेट में ट्रांसफर कर दूंगी. So once it is completely cooled down, I will transfer these into one plate. They are moving at this stage only because the greasing is good. अभी भी हिल रहे हैं, बहुत आराम से डीमोल्डिंग हो जाएगी क्योंकि ग्रीजिंग मैंने अच्छे से करी थी. बट बहुत गर्म है तो डीमोल्ड करने की कोशिश करूंगी तो अभी टूट जाएंगे बिकॉज दे आर वेरी हॉट. इफ आई विल ट्राई टू डीमोल्ड एट दिस पॉइंट दे विल ब्रेक. तो पूरा ठंडा होने के बाद आराम से आप या तो एक प्लेट रख के बिल्कुल उसके ऊपर डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, या एक एक पीस करके आराम से जेंटली बहुत प्यार से इनको निकालना है. ठीक है, और फिर आप इनको एंजॉय कर सकते हैं. तो फटाफट बता दीजिए रेसिपी आपको कैसी लग रही है. सो यू कैन क्विकली टेल मी हाउ डज दिस लुक टू यू. Yes, please do tell us. Janvi ने बोला है, Simran ने बोला है, they are loving this recipe. Simran also tells us that the recipe is great and easy. How should we store gum paste and fondant dough after opening the pack? If you can tell that, please. So we are doing classes for fondant. So I would request you to kindly join the classes. We have many trainers who are taking baking classes. So you can learn more about fondant and this also that how to store it. Exactly. All for a specific session. Many things about fondant. So बहुत सारे sessions हैं हमारे पंखुरी ऐप पे, बहुत सारे बेकिंग के ट्रेनर्स हैं. तो फॉन्डेंट से रिलेटेड कुछ कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हो और कैसे स्टोर करना है इसके अलावा बहुत सारी चीजें वहाँ पे सीख सकते हो. एंड ये अगर जितना भी अभी हमने बनाया है बकलावा अगर हम पूरा सेल कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द प्राइस? जनरली यू हैव टू सेल इट बाय द पीस. सो बकलावा जो जनरली सेल होता है वो पीस के अकॉर्डिंग होता है. ओके, बट अगर आप पूरा सेल करना चाहते हो तो आप लाइक नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से कुछ डिस्काउंटेड रेट पे आप पूरा सेल कर सकते हो. लाइक it is always sold at a box price or a piece price, and like we can say 1 2 3 4 there are 16 pieces. So for example, I'm selling it for 40 rupees per piece. So on the full I can offer it for like 35 rupees per piece, so that I can give for discounted because they are taking my whole recipe obviously. Yeah, right. And obviously so add the box cost also. Pieces के अलावा आप सेपरेटली अगर बॉक्स की कॉस्ट ऐड करना चाहते हो, अगर नहीं आपका सारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकल रहा पर पीस में, पर पीस की कॉस्ट थोड़ी कम लगा के या तो आप बॉक्स की कॉस्ट एक्स्ट्रा कर सकते हो या पर पीस में ही आप बॉक्स की कॉस्ट भी इंक्लूड कर सकते हो ताकि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि बॉक्स की कॉस्ट भी सेपरेटली ली जा रही है. ओके, सो इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो. बाकी मेरी क्लासेस होती हैं प्रॉपर बेसिक टू एडवांस और बहुत सारे कॉम्बोज हैं. तो एक प्राइसिंग की पूरी थ्योरी होती है. यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है तो मैं नहीं समझा पाऊंगी, बट आप मेरी क्लासेस एनरोल कीजिए पंखुरी ऐप पे, तो आपको प्राइसिंग का पूरा एक मैं समझाऊंगी कि कैसे प्राइसिंग आप निकाल सकते हो किसी भी प्रोडक्ट की, जो कि आपकी सारे रॉ मटेरियल्स और आपकी सारी कॉस्ट कवर करता है, प्रॉफिट कवर करता है. तो बिल्कुल आप मेरी क्लासेस एनरोल कीजिए और इसके अलावा बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं. Yes, exactly right. This is not the only thing जो आप जब आप पंखुरी पे enroll करोगे तो you'll be seeing there are a lot of things for you to learn there. So please do check out the app for more details. जैसे आप कमल ने बताया कि बहुत सारे trainers हैं. You will be able to see बहुत सारे basic to advanced चालू हो रहे हैं. Not only baking, हमारे यहाँ makeup, DIY and a lot of stuff are there. आप बस एक बार जाओ पंखुरी ऐप पर, you can just see and
see for yourself कि आप कितनी सारी चीजें सीख रहे हो at just one place and such affordable prices, right? So thank you so much, Kamal, once again for this lovely recipe. And yet again, I'm saying this, that you are my favorite baker. Thank you so much for taking Thank this you. amazing session. Thank you, Kamal. See you, viewers. We will please make sure that you check out the Pankhuri app. And yes, thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Bye bye. Bye.